तो हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू चैनल। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में, जहाँ पे भाई हम आजकल स्ट्रीम कर रहे हैं डेथ स्ट्रैंडिंग को। ये भाई एक ऐसा गेम है जिसमें तुम्हें चलते रहना होता है, चलते रहना होता है, चलते रहना होता है। मतलब जिंदगी से तुम थके हो इतने कि बस चलते ही रहना है। तो मंगल पे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं पता, चलते रहना है। खैर उसके अलग में अगर अगर उससे थोड़ा हटके देखें तो बाकी साइफाई प्रोस्पेक्टिव इसके मुझे काफ़ी बढ़िया लगे। वो अजीब गरीब उड़ने वाले क्रीचर, वो भी मेरे को काफ़ी सही लगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। दूसरी भाषा में बोलो तो अगर और क्या मेरे को इंटरेस्टिंग लगा यार इसमें, वो फीट फेटिश तो मुझे देखने को मिली नहीं इसमें। हिडन कोजिमा की जो थी शायद से वो 2 में, इसमें नहीं है। एनीवे भाई लोग, चलो गेम की तरफ सीधे चलते, भेजा खराब नहीं करते यहाँ पे। मैं आने में लेट कैसे हो गया, मैं इसका प्रॉपर रीजन दे सकता हूँ, पर सुनने वाला होना चाहिए कोई। टेस्ट कंटिन्यू, डायरेक्टर्स कट खेल रहा हूँ मैं, ठीक है। आज भाई इतना लेट, हाय भाई, हेलो विराट भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। अरे भाई एक्चुअली लेट कैसे हो गया मैं तुझे बताता हूँ, मेरे पास फुल प्रूफ वो है इधर इसके लिए रीजन। देख क्या हुआ, मैंने ना जब मैंने अपने कमरे में काम करवाया था, कितना 2-3-4 महीने पहले काम करवाया था, बहुत पुराना तो नहीं, 3-4 महीने पहले जब मैंने काम करवाया था, तो मैंने स्पेशली टेबल के नीचे 6 सॉकेट लगवाए थे पावर वाले, जिनसे डायरेक्ट पावर आएगी मॉनिटर को, लैपटॉप को, एक्सबॉक्स को, प्ले स्टेशन को, और कोई तीसरा आइटम घुस दिया तो उसके लिए भी 6 सॉकेट लगाए थे। तो कुछ टाइम पहले 6 में से 2 काम करना बंद कर दिए थे, फूक गए, क्या हुआ उनको कुछ पता नहीं चला। ऐसे आज मैं एक्सबॉक्स का बटन दबा रहा था, उसे चालू कर रहा था, तो वो एक बार चालू हुआ, फिर दूसरी बार में चालू ही नहीं हुआ। बाद में मैं टेस्टर लेके आया, उसमें बहुत देर तक माथा पच्ची करने के बाद समझ आया मुझे कि ये दोनों ओवर फूक गए हैं भाई। तो अब बस 2 सॉकेट बचे हुए हैं जो नहीं फूके हैं, उनका भी मौका लगने वाला है, वो भी किसी दिन फूक जाएंगे जैसे मुझे उम्मीद है, जिनसे लैपटॉप को और मॉनिटर को पावर मिलती है। उस दिन मुझे बिजली वाले को बुलाना पड़ेगा या फिर खुद ही मुझे कारस्तानी करनी पड़ेगी उसमें कुछ, तभी सही होगा। मेनली शॉर्ट में बोलो तो सॉकेट की दिक्कत थी कुछ यार, मैं लैपटॉप अपने कंसोल को चालू नहीं कर पाया था, 20-25 मिनट पहले चालू करने की कोशिश की थी, हुआ ही नहीं, फिर ये सब मुझे मगजमारी करनी पड़ी। अभी मैंने वो एक्सबॉक्स का तार घुमा फिरा के पुराने वाले सॉकेट में लगा रखा है, जिसमें मैं बहुत सालों पहले लैपटॉप को घुसा के चलाता था, बट क्या करूँ अब, दिक्कत ऐसी है भाई। गलत जगह के Sam, you'll need a PCC to build a post box. Fortunately, you can fabricate one at any terminal. Weapons restrictions lifted. इधर जाना है यार। Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. तुझे स्लो लग रहा है, Until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. होगा ये गेम। नहीं भाई इतना स्लो भी नहीं लग रहा है मुझे ये गेम, अगर मैं एक तरीके से बोलूँ तो, क्योंकि इसमें ना थोड़ा थोड़ा सिनेमैटिक पोर्शन लगा हुआ है, कि ऐसा नहीं अगर हम चल रहे हैं तो बोरियत लग रही है या बस चल ही रहे हैं, कभी इन्वायरमेंट मूव कर रहे हैं, कभी हम ही गिर जा रहे हैं, कभी सीढ़ी वगैरह लगा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके इंगेजमेंट है। हर 1-2
1.5 सेकंड के पॉइंट पे इंगेजमेंट How है, you doing, Sam? तो बुरा नहीं है। ये कोई नया यूज है, यूज आरटी फॉर फास्टर। अच्छा, एक्सपायर्ड मेंटिस के थ्रू खेल रहा हूँ मैं ये गेम। बीच मुझे एंगेजिंग लग रहा है। बहुत सारे गेम मैंने खेले ना, बीच में डेड से लगने लग जाते हैं कि बस कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। फॉर एग्जांपल असिसिन क्रीड, मैंने उसे बहुत खेला, पर एक टाइम के बाद मुझे लगा कि स्टोरी यहाँ से आगे ख़त्म हो जानी चाहिए थी इसकी, बट नहीं, उसमें एक्स्ट्रा बेफिजूल के मिशन ऐसे थे ना मिराज में कि बस मन ही उग गया देखते देखते उसे, कि करना है नहीं करना है। Weapons restrictions lifted. तो अपने आप ही गेम को छोड़ने वाली हालत हो जाती है। इसमें ठीक लग रहा है मेरे को काफ़ी, प्लस ऐसा भी नहीं है मैं इसे रेगुलर ही खेल रहा हूँ, तो उतनी बोरियत भी नहीं है। मैंने परसों स्ट्रीम किया था, कल नहीं किया, फिर मैं आज आ गया स्ट्रीम करने। नेक्स्ट पता नहीं कब करूँगा। तेरे साथ मैंने भी ये गेम चालू कर दी। सही करा भाई, एंजॉय कर, बेहतरीन गेम है। जितनी भी खेली है मैंने उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। दोनों भाई साथ खेलेंगे, इसमें कोई मल्टीप्लेयर वाला ऑप्शन नहीं है ना। ये हवा में क्या जा रहा है भाई वहां पे? खिंडना नहीं, खिंडना नहीं, खिंडना नहीं है, खिंडना नहीं है। बस शाबाश। अरे गिर गया तेरी। Get it together. इसका ही नाजायज बच्चा रोने लग जाता है तुरंत। Heads up, Sam. Your cargo's been pinged. Move. Now, before someone has eyes on you. Get to your destination ASAP if you don't want to get caught. आ रहा है भाई, वो आ रहा है, मुझे फीलिंग आ रही है। आ गया आ गया।
stay out in the rain any longer than you have to. फेयर लॉकर मेक डिलीवरीज ये नहीं कर सकते। पत्थर बहुत है यहाँ। ये क्या हो गया आगे? कोई केव छुपने की जगह कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। हो गया भाई, बच गया कम से कम। Something wrong, Sam? I don't know. Kid doesn't look so hot. Nothing to worry about. Its functions are temporarily suspended, but they can be restored. I can perform the necessary maintenance at a distribution center. Hurry, though. When the strain on your BV exceeds sustainable levels, it triggers the production of harmful compounds.
and the body, in essence, begins to attack itself. It's called autotoxemia. If your BB's not performing to spec, drop by your private room and see if the incubator helps. तो यहाँ से ज़्यादा मैं पैदल चला जाता। Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain on until the point. Cargo verified. Thank you. Decontaminating suit. Rest is advised. Deliver requested cargo. Way station folks told me all about you. Sam Bridges, with the second expedition, right? The guy expanding the chiral network on his lonesome, when he's not out making deliveries. So what'd you bring us? Let's see it. Talk about above and beyond. Thanks. Must have had to pass through BT territory to get here too, didn't you? They weren't joking when they said you were a legend.
सिर्फ 9% ही डैमेज हुआ कार्गो। Okay, it's time. Do you mind connecting us to the network? भाई वैसे GTA 6 डिस्क आएगा ऑन डे 1 ही। अच्छा कंफर्म हो गया, As always, thanks for bringing more folks into the फिर तो स्कैल्पिंग होगी यार, अब गरीब लोगों को मिलेगा भी नहीं हम जैसे। एंड समर से उसका प्रमोशन भी चालू हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट। पता GTA जैसे जैसे पास आता है ना, एक अलग से एक्साइटमेंट बढ़ जाती है दिल में कि हाँ भाई GTA खेलने को मिलेगी फिर से, क्योंकि लास्ट GTA 2013 में मिली थी। 13 में तो खैर मैं खेल ही रहा था। मैंने वो गेम खेली थी 22 में, 22 में खेली मैंने GTA, जिंदगी भर का सपना। Looks like we're on the chiral network. And with those materials you brought for our chiral printer, we can produce supplies for you here as needed. Think of it as our way of returning the favor. Now head west and keep on doing what you do. Good. The distro center is on the network. T2 ने अपनी अर्निंग कॉल्स में बताया। To a private room and connect it to the incubator. ग्रेट भाई, इससे ज्यादा क्या लेगा। मुझे यहाँ लॉस्ट कार्गो भी तो देना है। Sam, you can use share lockers to exchange cargo with other porters. भाई लोगों को GTA से ज्यादा क्रिम्सन डेजर्ट का हाइप है। क्रिम्सन डेजर्ट है कैसा भला, जरा चेक करता हूँ, रुक जा मैं। सुना सुना सा नाम है, मैंने पोस्टर भी देखा शायद से। Dead man, you there? Little help. Okay, Sam. Remove the pod and connect it to that incubator. It's in. उसका बॉस आएगा भाई, वो देखियो पता चलेगा स्ट्रीम एंड पर। Temporary एंड का इंतजार क्यों करना। प्रिपेयरिंग क्लिप डाउनलोड हो रहा है क्या, रिकॉर्ड हो गया, क्यों हो गया मैं भी नहीं जानता। ये रहा यूट्यूब। इसी से खेलते हैं। ये कैसा है, खानदान वाले क्या क्या देखते रहते पता नहीं। क्या नाम था उसका, क्रिम्सन। हाँ
एक तो ऐसे लिखना भाई बहुत प्रॉब्लमेटिक सा है। यह है ट्रेलर, 9 मिनट का है तो अच्छा ही फीचर है। ट्रेलर कहाँ है इसका? ट्रेलर 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 गेम्स एंड डेजर्ट रिजल्ट टेबल। हाँ चलो ये देखते हैं ये ट्रेलर। Citizens of Pywell. Today, a new chapter in this land's history shall be written. अब देखो भाई फुल क्वालिटी में। Citizens of Pywell. Today, a new chapter in this land's history shall be written by our own hand. We fight those who wield power to prey on the weak. Beasts who think themselves men. That is what it means to be a Freeman. The time has come to do what we believe to be right. Cliff, seek out your Greymane comrades. Uncover the truth that lies within. And let your heart speak without fear. In the end, all will come together as one. We fight for the future of all. Sound the horn of our final battle. Fight! Fight for Pywell! Your fight is not for revenge, nor glory, nor pride. Remember who you are, and let it guide your path. For at the end of it, you will find the answers you seek. सही है यार, गेम काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। पर इसे देख के ऐसा लग रहा है ये गेम असेसिन क्रीड ओडिसी को गेम ऑफ थ्रोन में डाल के बनाया गया है, ऐसी फीलिंग आई इसे देख के मुझे। कॉम्बैट स्टाइल, गेम प्ले स्टाइल ओडिसी वाला और स्टोरी लाइन गेम ऑफ थ्रोन वाली। कंटिन्यू। Easily addressed if we return it to its mother's womb. Mother? Located in the capital Knot City ICU. Brain dead, of course. You mean still mother? Correct. A steel mother's womb facilitates a connection between the world of the dead and the BB. And you, in turn, connect yourself to a BB, granting you the ability to sense BTs. These pods were designed to simulate the conditions inside a still mother's womb. BBs need to believe they're in one at all times to function properly. However, we can only maintain this deception for so long, which is why we must periodically update the environmental data by synchronizing it with a still... ये गेम असेसिन क्रीड प्लस आरडीआर प्लस स्काईरिम सबका कॉम्बो है। कह सकते हैं ऐसा में। ओडीसी वाला स्टाइल लगा था शुरुआत में मेरे को, बट नहीं, इनकी स्टोरी लाइन थोड़ी थोड़ी गेम ऑफ थ्रोन से मिलती जुलती है। Mother via the chiral network. There. The update is in progress. Right now the pod is synchronizing with the steel mother in capital Knot City and reconfiguring its settings based on the latest data. Returning your BB to the womb in this manner will temporarily reduce its stress levels. That being where it technically belongs, of course. Kid looks happy. I'll try adjusting the oxytocin dosage. Autotoxemia should set in much slower from now on. You should remember that BBs are just equipment. Try not to get attached.
Each one has been physically removed from its steel mother's womb. A process that renders them unpredictable and prone to failure. No BB on record has remained in service for over a year. It may need to be retired before this expedition is over. And then? You saying there's no way to keep my BB alive? You must understand, there is still a great deal we don't know about BBs. As we expand the chiral network and recover more past data, perhaps we'll find our answers. Oh, right. You asked me to look into why the BTs might be reacting to your blood. I spoke with Hartman. We should have your results soon. Anyway, get some rest. You and your BP are both exhausted. Good night, Sam. ये बांध के क्यों सोते हैं खुद को? उड़ के भी जाने का ना कोई खतरा है क्या? London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Sam? Can you see me? How are things over there? Still not under guard, still not chained up, still can't leave. But if you can keep making connections, if you can get to me, we can go back east, back home. Thank you. I mean that. It's bad. There are fewer and fewer people in the cities these days. No one's having children anymore. But humans aren't made for living alone. They're supposed to come together, to help one another. And if we as a people can't do that, if we can't reconnect, then, well, it's like Bridget said, extinction. Come on. Rebuilding America isn't gonna get rid of the BTs. As long as they're still around, there's no escaping it. But at least we'll have hope. इसकी बॉडी पे हाथ छपे हुए हैं अलग अलग तरीके से, क्यों? गेम को खेलते खेलते मुझे भी बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिले. Waiting for you. Come and find me. Hello, Sam. This is Hartman. Since you're awake, it might behoove you to freshen up. To that end, why not take a shower? It's good for the body and soul, and also my research as it happens. इतने सारे हाथ वाथ छपे हैं इसके ऊपर. Sam, this is Hartman. Deadman relayed your request to me, and I oversee BT research. I'll be taking a sample of your shower water in order to study the effects your bodily fluids might have on a BT. Study other people with dooms? Everyone in Bridges, myself and Mama. Results thus far are inconclusive. But you possess other singular qualities, being a repatriate as well.
fluids, waste products, drilling, dispensing. There. Take the sample with you. Should the opportunity arise, try using it on a BT. I'm curious to see how they react. Who knows? It may even prove beneficial to you. There was an old research paper detailing the effects of bodily fluids from individuals like us on BTs. It is only by recovering these materials that we can unearth the knowledge of the past. Not just the Death Stranding, but also the mystery of your body's unique properties and even our doom's affliction. There may well be hope for humanity. Sam, I have no interest in rebuilding America. I want to recover the past. Oh, it's almost time. After you make your connections and nothing happens, then what? I said, then what? Sam, sorry to bother you while you're taking a break, but I figured you'd want to hear this. Hell, maybe it'll help you rest easier. We received a number of messages addressed to you. I've not taken a look myself, but I gather they're mostly from your clients. You should see if they contain any useful information. Mail can be accessed via your cufflinks, as well as the terminal in your private room. There's something else I'd like to share with you. With the chiral network, we now have the power to reclaim our past. Data once thought lost forever from every corner of America can be pieced back together from fragmented records. Our archives are still a work in progress, of course. But as we expand the network and integrate more way stations and cities, we'll be able to recover more and more information, such as the previous expedition's logs and reports. Everything they sent back was lost when Central Knot City was destroyed. Now, we've managed to restore some already, in fact. You can access them from a private room terminal or your cufflinks by selecting Archives. Might make for interesting reading. अभी मुझे जूस पी के आना था, भूल गया मैं पर। Isn't what we agreed on? You said you'd do everything in your power to save Bibi. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This woman in the mask who's done nothing but lie to me. Sam, out of
of curiosity, how's it doing at the moment? Before I answer that, Something wrong? when I hook up my BB, I see things. What kind of things? Like a face, someone I don't know, calling to me. There's this room, too, with other people talking, but I can't make out the words. Bleed-through effect. Didn't I warn you about this? You're mistaking the BB's memories for your own. They're false flashbacks, nothing more. Let me explain. A BB is harvested from its steel mother at around 28 weeks and placed in a pod. To be clear, this is before it's even born. The procedure halts its development. But even at 28 weeks, its sensory systems have matured enough to process external stimuli. It is more than capable of encoding this information into memories, which can bleed into yours via your connection. So who's the man I saw? Someone from the medical team, maybe? Or a BB technician? Does it matter? The BB has been in circulation for a while now. It's been handled by a lot of people. How should I know which one made an impression? 'Cause you're the expert. No one's an expert, Sam. BBs were developed decades ago in secret. They're your quintessential black boxes. We may use them, but we don't truly understand them. Believe me, I've been trying to learn more, but almost all of the old records are gone. If I find anything out, I'll tell you, all right? Dead man's honor. Sam, check the delivery terminal and review the list of orders. While you're resting, I ran some network diagnostics. Beryllium monitoring and holographic systems are nominal. Unfortunately, our printer is offline. I know. After all the trouble you went through to bring us those materials. This one's on us. We ordered a part a while back, but it never arrived. The printer needs it to communicate with the chiral network. Mules must have snatched it, caught that porter en route or something. If I'm right, they'll have taken it to their drop site, which is smack dab in the middle of their territory. Don't suppose you'd be up for stealing us our property back? Can't think of anyone more qualified than you. Mama, if you don't have it on you, consider fabricating one. You never know when you'll need to recon an area. That thing you're holding is a crystal collector. Now, as the name suggests, it provides secure storage for any crystals you gather. Allow me to describe your quarry. Chiral crystals appear gold to the naked eye and are frequently found in formations resembling human handprints. Surrounding rocks and debris tend to float a few feet above the ground. And they are most commonly found in areas with high precipitation. Got all that? Rain, floating rocks, golden handprints. That's your trifecta. Look for these three things and you'll find the crystals. If you've been especially observant, then perhaps you already know where to look. Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey. Don't mind me. वापिस जाना है मेरे को, हो गया बस।
weapons restrictions lifted. Sam? Seems like that bike's auto-charging unit is busted. If you want to take it for a spin, you'll need to use a generator to give it some juice. Beginning scan. Scanning bridges ID. जनरेटर कहाँ मिलेगा इसके लिए यार? Clear. Weapons restriction. Lifted. Sam, chiral crystals are pretty small and can be difficult to spot with the naked eye. I'd advise you to use your ultradect to point you in the right direction. If you want to survey a wider area, though, you might consider building a watchtower and relying on its sensors. There we go. There we go. Nice. यार कह रहा था बहुत दिक्कत में मिलता है, पर ये तो आसानी से मिल गया मुझे, ऑलमोस्ट जगह जगह लग रहा है. There we go. There we go. चल 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 जल्दी चल.
this is nice. Nice. Beginning scan. Scanning bridges ID. Sam, chiral crystal deliveries are a bit different from usual. The process is pretty simple, though. Access the delivery terminal to drop off any chiral crystals you're carrying. Sam Porter Bridges. ये बहुत भारी है. Got some chiral crystals for us? These crystals only form in places with elevated chiralium levels, which makes me wonder if expanding the network had something to do with it. Not a bad haul. Plenty enough for research. We'll take good care of it. Excess. These local stores include materials that you can draw upon to fabricate equipment as needed. Good work, Sam. As your connection level increases, larger quantities of resources will be made available to you at our facilities.
भाई बहुत अचीवमेंट अनलॉक हो रहे हैं एक साथ। That's good for dealing with timefall degradation and all that. Useful stuff if you and your cargo have been through the ringer. We've added it to your supplies list, so it's readily available if and when you need it. There is a correlation between elevated Corellium levels and increased crystal formation. This may well be the result of the network's expansion. You needn't worry though. Local chiral density is still within an acceptable range. If you find any more, be sure to collect it. You'll be well rewarded. If you come into more chiral crystals, you can submit them at one of our facilities. And you can deposit other resources too, along with any items you don't need. Everything has its value. What we don't use as is can be broken down into components for R&D and other applications. Thank you for your contribution. Beginning. Scan. Have a pleasant journey. अब कहाँ जाना है यार? इसमें मैप में भी मार्किंग नहीं दिखाई दे रही। वापस जाना है क्या मुझे? Weapons restrictions lifted. सीधा चलता हूँ, अभी मैं बाद में देखूंगा।
इनका एरिया कवरेज तो बढ़ता जा रहा है। भाई कितने हैं यहाँ पे? पकड़ लिया यार इनने। इनसे बच के निकलना काफी टफ काम है, भूतों की तरह खड़े रहते हैं। चल भाई ब्रो 12 बजने वाले हैं, कल मिलेंगे। ठीक भाई, बाय।
और अभी भी मैं कितनी दूर हूँ जबकि इनसे, अभी तो मेन आए इनकी वो आए भी नहीं टेरिटरी। Breathe easy, Sam. You're clear of BG territory. The Death Stranding's to blame for all of this. The gazers, the fall of America, everything. It warped the world beyond recognition. Humanity had to scramble like rats fleeing a sinking ship. But there's nowhere else to go. There's no future living like this. If we're to survive, we need to find another way. A way to overcome the BTs. The Death Stranding, the whole damn mess. क्या ही सोच के बनाया होगा भाई कोजिमा ने गेम, तो सही कह रहा है भाई। क्या बुद्धि लगाई होगी ये मुझे भी नहीं समझ पा रही है। बाकी ये बात है ये गेम इंटेंस बहुत है। आरई की तरह इसमें स्ट्रेट आउट हॉरर इफेक्ट नहीं है कि मतलब भूत आंखों के सामने जंप स्केयर देगा या अगल बगल से पीछे जाएगा, बट इसका एसएफएक्स काफी बढ़िया है। जो फियर होता है ना उसे अच्छे से मेंटेन कर रहा है। मैं भी चलता हूँ भाई, ये डिलीवरी करनी है बस, इसके बाद चलता हूँ मैं। Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Sam, Sam, assuming you've order got your bridges. PCC in order, head to the site I designated and build that post box, would you? You should have no trouble finding it if you check your map and compass from time to time. आज के लिए बहुत दिमाग लगा लिया भाई, अब कल लगाऊंगा मैं, कल देखूंगा क्या करना है मुझे। आज के लिए बहुत दिमाग लगा लिया मैंने।
चल भाई, जाने का टाइम हो गया, कल मिलेंगे, बाय बाय टाटा सी यू। 12 बज चुके हैं।